Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the Sensex expiry. आप लोगों को पता ही होगा कि सेंसेक्स एक्सपायरी अब से ट्यूसडे के होंगे, राइट? अभी फ्राइडे जो है वो डेट्स चेंज हुआ है, राइट? तो सेंसेक्स एक्सपायरी विल बी गोइंग टू हैपन एवरी ट्यूसडे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड आज के लिए हमारे होस्ट होंगे मधुर सर, योर सेंसेक्स किंग, राइट? सो लेट्स वेट फॉर हिम एंड मीनवाइल अगर हम लोग मार्केट भी अगर देख पाए तो निफ्टी एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव ही है। सुबह एक हमें ओपनिंग अच्छी खासी दिखी थी, राइट? फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा उसमें फॉल दिखा निफ्टी में, कंसिडरिंग कि एक फैक्टर हो सकता है टू द न्यू केसेस दैट बीन डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र आल्सो, राइट? एंड बैंक निफ्टी देखा जाए तो इट्स नियरली लाइक 0.6% अपसाइड पे, 300 पॉइंट्स की अपसाइड पे है एंड सेंसेक्स भी 0.2% अपसाइड पे है। तो अगर देखा जाए सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव टू फ्लैटिश ही है सेंसेक्स भी अगर देखा जाए तो, बट या लेट्स वेट फॉर मधु सर कि हमें कौन सी साइड पे कौन से डायरेक्शन में प्ले करना है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो 10 बजे के बाद से एक पूरा साइडवेज रेंज में ही सेंसेक्स पूरा मूव हो रहा है, राइट? तो यहाँ से हम देखते हैं कि या तो ये नीचे जा रहा है कि अपसाइड पे जाएगा. So Madhur sir is here with us and he will be the right person to guide you around the trades, around any of the stock queries you will have with yourself, right? So start putting your stock queries on the chat section. Sensex put में ही ट्रेड बनेगा, कॉल में लॉस हो गया संभल के. पटेल जी डेफिनेटली अगर आप मार्केट भी देखोगे सेंसेक्स एकदम साइडवेज ही मूव हो रहा है कुछ काफी 2-3 घंटों से, 10 बजे से, इनफैक्ट 10:30 बजे के टाइम से. तो यहाँ से एक डायरेक्शन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है. सो लेट्स सी, मधुर सर आपको डिटेल में पूरे गाइड कर देंगे. सो मधुर सर, लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल टू यू. Yes, Agnes. Great. So Madhur sir, let me know if we are good to go, then you can start with the session. Yes, we are good. Very good afternoon, everyone. Welcome back to the Sensex expiry. Starting this week, Sensex expiries will be now on Tuesdays, right? Following the recent notification from the BSC. Earlier, it used to be on a Friday, but from this week, we have the Sensex expiry on the Tuesday itself, right? So this change is expected to bring some new dynamic to weekly trading pattern as traders and investors adjust to the new schedule, because there are two changes in the Sensex, right? The weekly expiry is on Tuesday from today onwards, and from last week the lot size changed from 10 to 20, right? And for this it may take I think 15-20 days, 30 days for traders to adjust this kind of changes, and that's why we can witness some volatile swings in the index. In last Friday, I've discussed one thing that in every January in last 10 years, the India VIX up by on average 22%. And if I talk about the yesterday's movement, India VIX was up by nearly 15%, right? And that's because of maybe the China news or the HMPV virus outbreak in China that added some pressure on in the index. But the good part कि आज वो follow up selling हमें देखने नहीं मिली है, right? So over the last 3 trading session, peers have taken a full control. If you look at the daily chart of the Nifty, because this is the daily chart, you can see last 2 to 3 trading session, Nifty made a high around 24,200, and from there onwards we can see the follow up selling of more than 500 points, right, hovering near its 200 DEMA. And every bounce is getting sold in the index from last 2 to 3 trading session. So we need to keep on mind, because if now look at the hourly chart, Nifty today morning opened on a positive note. It made a high around 23,800, and from there onwards index again get in a pressure mode, and वहां से हमने काफी अच्छा selling देखने मिला है, right? From last 2 hours, index traded in a sideways range of 100 points. Yes, the bias is slightly negative,
We will go with the put buy or the long strangle, right? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो नेकेड पुट बाय की हम बात करेंगे. इन केस अगर पुट बाय में समझ में नहीं आ रहा है तो विल गो विद द स्ट्रेटेजी. एज ऑफ नाउ आई एम ट्रैकिंग 78 300 पुट right now trading at the 170 180 level. I want this in dip. 78 300 का पुट मैं ट्रैक कर रहा हूँ. वन एट्टी के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 22,500 22,400 जोन. लास्ट 2-3 बार वहीं से सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस हमें देखने मिला है. सो एज ऑफ नाउ टिल इट होल्ड्स 22,300 400 जोन तब पैनिक नहीं नजर आ रहा है. अगर वो लेवल ब्रिज होता है तो वी कैन सी मोर डाउनवर्ड इन द निफ्टी. एंड टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, as I said, ki today's resistance is around 23,800 and then 24,000. So 23,800 24,000 एक काफी strong resistance निफ्टी में नजर आते हुए नजर आ रहा है हमें. Right? Let's talk about the bank nifty. So bank nifty yesterday was down by more than 2%. Right? Sorry, bank it's bank nifty yesterday was down by more than 2%. Right? And today it again took a resistance is near 200 DEMA. Earlier 200 DEMA was working as a support. Now that earlier support is working as a resistance for the bank nifty. Right? Even today morning a high made a high around 50,450. वहां से थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला है. राइट, बिकॉज द एचडीएफसी बैंक ट्रेडिंग साइडवेज मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे था, वहां से थोड़ा बाउंस देखने मिला है. बट ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक से कोई खास स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर नहीं आ रही है हमें. दैट्स व्हाई द बैंकिंग इंडेक्स इज आल्सो सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला है. राइट, तो बैंक निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट एट द 50,000 एंड देन 49,750 लेवल. और ऊपर में अगर मैं बात करूं तो 50,500 इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड देन 5750. So 5,500 5750 are the hurdles for the bank nifty and the supports are seen at 50,000 and 49,750 zone. If I talk about the Sensex, so Sensex immediate support is seen at the 78,000, 77,900, 78,000 is the immediate support for next 1 hour inter expiry purpose, and the hurdles are seen at 78,300 zone. So I am tracking the put. Bias is slightly negative. We are trading below its weekly VWAP as well, and that's why the bias is slightly negative. 78,300 का put हम track कर रहे हैं, trading at the 180. If we get the dip in 78,300 put towards 120 130 zone, it will be better for us. In that case, the risk reward will be more favorable. As of now, trading near 180 185. एक यहाँ से 50 पॉइंट का डिप इसमें आता है, so it will be good for us. Otherwise, we need to shift to the next strike. 78 200 की अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट इज ट्रेडिंग नियर 95 लेवल एंड 300 अगर मैं बात करूं तो 180 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है. So this is a chart of 78 300 put. Last 15-20 minutes, we have seen some action in the index in last half an hour precisely, because after the morning session, there was a sideways movement in the index. In last 30-40 minutes, seen some action. थोड़ा सा bounce देखने मिला इस put में हमें 78 300 में. It was trading at around 80 90, वहां से एक 100 पॉइंट का मूव इसमें देखने मिला. So I want this put around 120 130 level. अगर वहां पर आता है तो it will be great. In that case, the risk reward will be more favorable. Even after the market falls yesterday, we have seen some good stock specific action.
Specifically, if I talk about this Nifty Pharma and along with the chemical and fertilizer stocks, फार्मा में काफी अच्छा एक्शन हमें देखने मिला है. स्पेसिफिकली हेल्थ केयर फार्मा में अगर बात करूं तो विजय डायग्नोस्टिक हो सकता है, हैरो केयर, और केमिकल में फर्टिलाइजर में आप देख सकते हो फैक्ट का चार्ट बहुत अच्छा है. इवन आरसीएफ इज अप बाय मोर देन 7-8%. तो काफी अच्छा एक्शन इसमें देखने मिला है. Yes, I'm still time we can take some queries. ग्रेट. तो मधुर सर, एक्चुअली सुबह हमें देव सर ने एक स्ट्राइक फोकस में रखा था सेंसेक्स का ऑफ 77,800 पुट आई गेस, एंड हमने उसमें एक अच्छा खासा अपसाइड भी देखने मिला. सुबह के ट्रेडिंग सेशन में भी मैनेज टू एंटर इन ईयर 150 एंड इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 175 और समथिंग 180. उसके बाद हमने उसको वापस इनिशिएट किया था टू बाय नियर 115 एंड स्टॉप लॉस हमने लोगों को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखने कहा था. So could you please update on that strike of 77,800 का put? 77,800 नहीं होगा, I guess, Avinash, because that put is trading around 5 rupees. So I don't think so कि इतना नीचे का स्ट्राइक दिया रहेगा, इतना डीप ओटीएम दिया रहेगा. It was 77,800 only. Okay, so maybe because of the sideways movement in midday, शायद उसमें डिके हुआ रहेगा. तो किसी ने अगर फिर से लिया रहेगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा. So meanwhile then Madhur sir will move with the stock queries only, and इसके बीच में अगर आपको कोई भी delivery ideas कोई stock दिख रहा है या BTST दिख रहा है, do let us know also so that we can share it with our clients also, right? Yes. So again the most frequently asked counter and the stock Zomato. So what is your view on Zomato? What to do now since आज हमें उसमें 2 से 3% का एक डाउनसाइड देखने मिला था, 4% I guess 4.5. So yeah, what is your view on it? थोड़ा सा इस पुट में हमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने मिला है. इट मेड अ लो ऑफ 154. स्टिल वी आर वेटिंग फॉर मोर डिप. इफ यू गेट अराउंड 120 125 we'll enter on that price, right? So let's talk about Zomato. So this is the daily chart, and after quite a long time we are seeing some biggest fall in the Zomato, right? Stock is down by nearly 4.5%. अगर मैं ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी भी सेटअप यहाँ पे कुछ बहुत खराब नहीं हुआ है, राइट? स्टॉक इज इन मोड के यहाँ जब जब नीचे में आता है वहां से काफी स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग देखने मिलती है. थोड़ा सा इस पे आज कोई ब्रोकरिंग फर्म ने थोड़ा डाउनग्रेड किया है, दैट्स व्हाई स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 4%. बट इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट लेवल, 240 to 45 is a strong support level for the Zomato. अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो वन कैन बाय अराउंड 250 to 40 लेवल and hold for long term upside. You can see the 300 400 target. Power Grid bought at 30. नहीं, Power Grid 305 put bought at 7.1. Power Grid put by which strike? 305 का put buy किया Power Grid में 7.1 rupees में. Okay, so overall structure काफी weak है. Stock is trading its 200 DMA as well. उसके नीचे closing हुई और उसके नीचे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है हमें. So you can hold that put, right? अगर मैं नीचे में बात करूं तो स्टॉक यहाँ पे आपको 295 तक की टारगेट नीचे में देख सकते हो, तो यू कैन होल्ड द पुट. So after couple of days we are getting these questions on the rail sectors. What is your view on RVNL and RailTel? So talking about the RVNL, from last almost 6 to 7 weeks, stock is in a consolidation. It is trading from 405 to upper में 482. एक 60-70 पॉइंट के रेंज में स्टॉक ट्रेड होते नजर आ रहा है, बट जो सेलिंग प्रेशर था ऊपर के लेवल से वो बहुत कम हो चुका है अब, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट पर. सो स्टिल इट ये जब तक 485 का लेवल निकालेगा नहीं ऊपर में, यहाँ से बहुत मेजर मूव देखने नहीं मिलेगा. बट किसी को बाय करना तो सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हो अराउंड 400 लेवल.
400 के लेवल पे बाय करके आप यू कैन कीप द 350 एज स्टॉप लॉस। ऊपर में आपको 480 520 के टारगेट देखने मिलेंगे। Great. The same. Could you please tell us on retail as well? इवन रेलटेल की भी चार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट नियरली सिमिलर है। सेलिंग प्रेशर जो ऊपर के लेवल से था वो काफी कम हो चुका है। स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फ्रॉम लास्ट 4 to 5 वीक्स, बट अगेन प्रॉब्लम के ऊपर में फॉलो बाइंग देखने में मिल रही है। इट टेकिंग रेजिस्टेंस नियर 460 480 लेवल, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है हमें। तो नीचे के लेवल पे आप बाय कर सकते हो, ट्राई टू बाय अराउंड 380 लेवल। वहां से आप ऊपर में आपको बाइंग देखने मिल सकती है। 380 के लेवल से अगर बाय करते हैं तो ऊपर में आपको 420 के टारगेट देखने मिलेंगे। So could you please update on the Sensex strike? Yeah, I'm still tracking, Avinash, that put is trading around 170 165 लेवल, राइट। थोड़ा सा डीप नीचे 155 के तक आया था, वहां से थोड़ा सा बाउंस आया फिर से। पर स्टिल वेटिंग कि यहाँ पे हमें एक डिप देखने मिले। अगर नहीं मिलती है तो देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट ट्राइब। Please suggest your view on BHEL and Woodco for 2 days perspective, maybe for a छोटा सा delivery के लिए. BHEL, Yes, BHEL and Woodco. okay. So talking about the BHEL, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन देखने मिला है हमें, राइट। नीचे के लेवल से बाइंग देखने मिली है। सो अगर किसी को आपने अगर बाय किया रहेगा तो यहाँ पे आपको 230 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। बट अगर आपको 2 दिन के हिसाब से लेना है तो आप 220 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, राइट। हुडको में काफी अच्छा नीचे के लेवल से हमें रिकवरी देखने मिली है, बट प्रॉब्लम है कि ऊपर में फिर से सेलिंग भी देखने मिली है यहाँ पर। तो स्टॉक में एक रेंज के अंदर काम करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे नीचे में अगर बात करूँ तो 220 का लेवल है और ऊपर में 250 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है। अगर आपने बाय करना है तो वन कैन बाय अराउंड 235 लेवल। ऊपर में आपको एक 10 से 12 पॉइंट का मूव इसमें देखने मिलेगा। HFCL, view on HFCL. Okay. Before that, I'm tracking the Sensex put, Avinash. Give me 2 minutes. बिकॉज द पुट जो हम ट्रैक करें तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम हुआ है, 10 से 12 पॉइंट का और स्विंग आया है। सो लेट्स, मैं फिर से नया जो नेक्स्ट स्ट्राइक है अराउंड 78 200 का स्ट्राइक में ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पर। दैट पुट इज ट्रेडिंग नियर 99 लेवल, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग। अगर किसी को बाय करना है सो वन कैन बाय 78 200 पुट एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग एट द 95 लेवल, राइट। 90 के आसपास आप बाय कर सकते हो। नीचे में कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 62, 90 के आसपास ट्रेड होता नजर आ रहा है यहाँ पर। 62 विल बी द स्टॉप लॉस। और ऊपर में हमें लग रहा है कि 140 तक का इसमें टारगेट आना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने रखा है बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत बड़ा, अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली नीचे आता है तो बड़ा लॉस हो हमारा, राइट। हमारे बाइंग रेंज के आसपास ही है अभी भी। पूरा सा लास्ट 30-40 मिनट थोड़ा सा स्विंग देखने मिले हमें, बिकॉज द पुट हम जो ट्रैक कर रहे थे 78 300 अभी भी वो 190 के आसपास ही ट्रेड होते नजर आ रहा है।
उसमें डिप नहीं आया, that's why we shifted to the next strike 78,200. Yes, Avinash. View on Bajaj Housing Yes, Finance. Avinash, the message you pinned, that is a 77,200 put, but it's a 78,200. So please edit the message. 77,200, right? 78,200. Okay, right. We have pinned it now. Yes. So, guys, we have posted the updated trade and it's pinned as well. And guys, please make sure you put a strict stop loss of 62. So, Madhur sir, can we take few stock queries? Came Yes, back yes, momentum in this trade. yes. HFCL on daily time frame. डेली चार्ट की बात करें तो बहुत कुछ खास मोमेंटम है नहीं यहाँ पर, राइट? सो स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड एंड कोई खास मोमेंटम नहीं है यहाँ पर. सो किसी को बाय करना है तो एज ऑफ नाउ अवॉइड करें इस प्राइस पे बाय करने के लिए. ट्राई टू बाय अराउंड 100 लेवल. 100 के अगर बाय करते हो तो वहां से एक बाउंस के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो. Your view on Gale. So we have seen some profit booking across Nifty CPSE index, right? So Gale में भी आप देख सकते हो. Recently it made a high around 215, and from that it forming a lower top lower bottom, and almost वहां से 15% 20% का करेक्शन हमें देखने मिला है. So सपोर्ट की बात करें तो 180 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट? सो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है, वन कैन बाय अराउंड 180 लेवल. ऊपर में आपको 200 के टारगेट देखने मिलेंगे इसमें. Right. Your view on Electra Green Tech. Okay. So the weekly chart and stock is in downtrend. You can see on the weekly chart forming a lower top, lower bottom, right? Almost from last 8 to 10 months. So स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आता है यहाँ पर. किसी को फ्रेश बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो. जैसे सपोर्ट लेवल दैट इज अराउंड 1300. यहाँ पे और थोड़ा सा डीप हमें देखने मिल सकता है. तो स्टार्ट टू बाय अराउंड 1300 लेवल. वहां से ऊपर में आपको स्लो एंड स्टेडीली 1450 के टारगेट देखने मिल सकते हैं. मधुर सर, सिर्फ हमने ये जो ट्रेड इनिशिएट किया था नियर 90 एंड इट्स करंटली ट्रेडिंग नियर 77, आई वुड से 79. तो जिन्होंने भी एंट्री नहीं लिया, इज इट अ राइट पोजीशन टू एंटर राइट नाउ लोअर लेवल पे? या बिकॉज हमारे बाइंग रेंज में ही है तो आप बाय कर सकते हो, राइट? 82 83 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी भी. एंड मधुर सर, जिन्होंने भी 90 पे एंट्री किया है, should they average it out, adding more on the downside? नो, एवरेज नहीं सजेस्ट नहीं करूंगा मैं. कीप द स्टॉप लॉस 62 एंड हम एवरेज की सलाह नहीं करेंगे बिकॉज इन ऑप्शन बाइंग एवरेज कभी नहीं करना चाहिए, राइट? श्री कृष्ण जी, हमने ओलेक्ट्रा के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बता दिया. We'll move ahead to the next stock query. So Madhur sir, do we have any BTHC trade or any delivery stock for today?
BTST I'm tracking, Avinash. Will update on that, right? As of now कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, but pharma stocks हमारे radar पर है, right? Even one can go for the RCF as well. और डिलीवरी के लिए जो चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है जो जेके सीमेंट. Um, so there is a question on Suzlon Energy for long-term view. Suzlon. Right. ये तो सुजलॉन की मैं बात करूं तो सुजलॉन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 8 to 10 वीक हो गए ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट इज अराउंड 70 लेवल. 70 से हर बार उसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है. बट अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो वन कैन कीप द सुजलॉन, राइट. तो नीचे में सपोर्ट से बाइंग देखने मिलती है हमें अराउंड 52 55 लेवल से. 55 से हर बार इसमें बाइंग देखने मिलती है, तो ट्राई टू बाय अराउंड 55 56 लेवल. एंड ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म में 80 80 90 के टारगेट देखने मिलेंगे. Okay. So what is your view on Taj GVK Hotels? या अविनाश बिफोर दैट निफ्टी में थोड़ा बाउंस आया, तो जो 78 200 पुट था उसका एसएल हिट हुआ है, राइट. सो बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड बिकॉज यहाँ में लग रहा था और थोड़ा सा इंडेक्स नीचे आएगा, बट निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस आया 20-25 पॉइंट का, एंड दैट्स व्हाई द 78 200 पुट नीचे ट्रेड होता नजर आ रहा है. जो इसका सपोर्ट था अराउंड 62 लेवल वो भी ब्रीच हुआ है और अभी 40 के आसपास है, तो इसका एसएल 62 पे हिट हुआ है. सो प्लीज एग्जिट द ट्रेड. So guys, हमने जो ट्रेड दिया था इट्स करंटली ट्रेडिंग है 39. हमने 65 का स्टॉप लॉस 62 का स्टॉप लॉस दिया था एंड वो ऑलरेडी हिट हो चुका है. प्लीज एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड्स एंड दिस विल डेफिनेटली ट्राई कि अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है तो वी विल शेयर, और एल्स यू नो विल गिव द BTST ट्रेड एंड could the delivery idea from, and then we'll take a query 1 or 2, then we'll end the session. So yes, Madhur sir, your view on Taj GVK. Okay. Taj GVK is trading its near 52-week high. Overall setup काफी strong है. डिप में बाय करें इसे, राइट. यू कैन बाय अराउंड 420 लेवल. ऊपर में आपको 500 के टारगेट देखने मिलेंगे इसमें. Okay. So guys, this will be the last query for today. If you on Kalyan Jewellers. So कल्याण ज्वेलर का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, फॉर्मिंग द पोलन फ्लैग ऑन द वीकली चार्ट. आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है हमें, बट ओवरऑल सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है, राइट. वंस इट क्लोज अबव 800 लेवल तो ऊपर में आपको तो ऐसे 3-4% कम देखना. एज ऑफ नो किसी को सपोर्ट के आसपास बाय करना है तो ट्राई टू बाय अराउंड 680 690 लेवल. वहां पे स्ट्रांग सपोर्ट है इसका. ट्राई टू अराउंड बाय दैट लेवल. Great guys, so that's it from our end from the point of stock queries, and we'll definitely try to give you a BTST trade before we end session. So Madhur sir, could you please update on any of the BTST trade? Sure. Okay. So one stock looks good for the BTS is Anand Raj, right. आप देख सकते हो यहाँ पे stock is up by more than 3% and near trading in 52 week high. एक रेंज के ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, तो वन कैन बाय अनंत राज राइट नाउ ट्रेडिंग एट द 885 लेवल. स्टॉप लॉस विल बी 860 और ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 920 930 के टारगेट आना चाहिए. Great. So guys, हमने एक BTST भी शेयर किया और अनंत राज मैंने पिन भी कर दिया. So to buy near it, you should buy it near on the CMT. Currently trading near 886 levels, right? With a stop loss of 860, the target for the upside will be 920. Right. So I guess Madhur sir, that's it from our end. Could you please let me know if you want to add anything more or some of the session before we end the session?
अगर किसी को पोजिशनली कुछ बाय करना है, कोई स्टॉक, दैट इज SBI Life looks very good, right? You can see this is the weekly chart of SBI Life. ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रॉम लास्ट 2 years फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन, हर बार वहीं से आगे काफी अच्छा मूव इसमें देखने मिलता है. सो वन कैन बाय SBI Life एट द करंट मार्केट प्राइस. स्लो एंड स्टेडी ऊपर में आपको 1550 1600 के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं. बट दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, नॉट अ CDI और समथिंग लाइक इंट्राडे. ये नहीं है. फ्रॉम नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यू कैन बाय दिस. Great. So that's it, guys, from our end. Thank you so much, guys, for joining. Thank you so much, Madhur sir. So see you tomorrow, guys, Yes, in the morning session. thank you.